इस साल बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही मेंदरडा और आसपास के इलाकों में अब तक अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में किसान बेहद खुश है। तब उनकी ओर से धरती माता की विधिवत तरीके से पूजा कर फसल की बुआई का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में जो कि मेंदरडा के आसपास है, वहां पर अच्छी बारिश अब तक दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जो स्थानीय किसान हैं उनकी ओर से धरती माता का पूजन कर मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसल की बुआई के श्री गणेश कर दिए गए हैं। तो वहीं किसान जो है इस बार अच्छी फसल होने की और उनके अच्छे दाम मिलने की आस भी जता रहे हैं। तब आपको बता दें कि किसान जो है तो बेहद खुश है, उत्साहित है और उनकी ओर से खेती बाड़ी से जुड़े हुए कार्यों की शुरुआत भी कर दी गई है। મારું નામ પરસોત્તમ ઢેબરિયા, ગામ મેંદરડા। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મેંદરડા પંથક સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં સમયસર વરસાદ વરસતા વાવણી સારી એવી થઈ ગઈ છે, જેથી ખેડૂતોમાં હર્ષોલ્લાસ તેમજ આનંદ છવાઈ ગયો છે। જેથી ખેડૂતોએ હોશે હોશે મોંઘાદાટ બિયારણો, ખાતર, દવા જેવો ખર્ચો કરીને ચોમાસું પાકનું વાવેતર કર્યું, જેમાં મુખ્યત્વે મગફળી, સોયાબીન, અડદ જેવા પાકોનું વાવેતર કર્યું છે। આવતું વર્ષ ખેડૂતો માટે લાભદાયી અને ફળદાયી નીવડે તેવી આશા રાખી રહ્યા છીએ। તેમજ પ્રભુને એવી ખેડૂતો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે ચોમાસું પાકમાં મગફળીમાં રોગ જીવાત તેમજ ઈયળોનો ઉપદ્રવ ઓછો આવે, ખેડૂતોને ઉત્પાદન સારું મળે અને ખેડૂતોને આવક પણ સારી રહે, જેથી કરીને ખેડૂતોને સારું રહે આવતું વર્ષ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।